हे जैकी, यह देखो। यह गेंद जैसा दिखता है, लेकिन यह असली गेंद नहीं है। फिर यह क्या है? हैरी, यह फुटबॉल की छाया है। यह इसलिए बनी है क्योंकि फुटबॉल ने सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए आओ, अब छाया और इसके बनने के बारे में कुछ जानते हैं। आओ सीखें। छाया को पहचानना, छाया के निर्माण का कारण बताना, प्रकाश के स्रोत के आधार पर छाया की दिशा जानना। छाया। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यह चर्चा करते हैं कि छाया होती क्या है। दरअसल छाया एक अंधेरा क्षेत्र होती है जिसका निर्माण किसी वस्तु द्वारा प्रकाश के अवरुद्ध हो जाने के कारण होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलने के साथ ही छाया की दिशा भी बदलती रहती है। उदाहरण स्वरूप, जब सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है तो पेड़ों की छाया बदलती रहती है। दिन भर में कभी यह छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। आओ देखें यह कैसे होता है। Do you know what it means, बालू? क्या तुम इसका मतलब जानते हो, बालू? The lion walks on padded paws. शेर अपने मोटे पंजों के द्वारा चलता है। The squirrel leaps from limb to limb. गिलहरी अपने एक पैर से दूसरे पैर पर उछल कर जाती है। While flies can crawl straight up a wall. मकड़ियां दीवारों पर रेंगते हुए चलती हैं। रेंगना हाथों तथा घुटनों के द्वारा चलने की प्रक्रिया। And seals can dive and swim. सील मछली डुबकी लगा सकती है और तैर सकती है। The worm, he wriggles all around. कीड़े मकोड़े कहीं भी रेंग कर चल सकते हैं। The monkey swings by his tail. बंदर अपनी पूंछ से लटक सकता है। श्वसन। श्वसन के दौरान लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे भोजन में बंधी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है और जीवधारी के शरीर की अन्य जैविक क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। सभी जीवधारी श्वसन करते हैं। उत्सर्जन। उत्सर्जन द्वारा शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया व यूरिया आदि जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं, इनका शरीर से निष्कासन होता है। परिसंचरण। परिसंचरण के द्वारा पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त के साथ पहुंचते हैं। रक्त शरीर में बने उत्सर्जी पदार्थ का भी परिसंचरण करता है। ચાલો આજે આપણે કોઈ એક તાલુકા અંગે આ બધી બાબતોની ચર્ચા કરીએ. ગુજરાતમાં ઉત્તર ગુજરાતનો બનાસકાંઠા જિલ્લો. બનાસ નદીના કાંઠાની આસપાસમાં વસેલા પ્રદેશનો બનેલો છે. જિલ્લો 23-33 24-45 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 72-2 પૂર્વ રેખાંશ પર પથરાયેલો છે. આ રીતે આ જિલ્લો ગુજરાતની ઉત્તર પશ્ચિમ બાજુ પરના ભાગોમાં પથરાયેલો છે. જિલ્લાની ઉત્તર બાજુ રાજસ્થાન રાજ્યના મારવાડ તથા સિરોહીના પ્રદેશો,
પૂર્વમાં સાબરકાંઠા જિલ્લો તથા જિલ્લાના પશ્ચિમ ભાગમાં પાટણ જિલ્લો આવેલો છે. કીર્તિસ્તંભ, જેને 1930માં બંધાવવામાં આવ્યો. જોરાવર પેલેસ, જ્યાં અત્યારે સરકારી કચેરી આવેલી છે. શશિવન, જહાનારા બાગ. હવે વિભાજ્યતાની ચાવીઓ શીખીશું. ભાગાકાર કર્યા વગર જ જે તે સંખ્યા વિભાજ્ય છે કે નહીં તે જાણવા માટેના નિયમને વિભાજ્યતાની ચાવીઓ કહે છે. બાળકો, આપણે હવે આ ચાવીઓ વિશે શીખીએ. સૌ પ્રથમ 2ની વિભાજ્યતાની ચાવી. બાળકો, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2, 4, 6, 8 કે 0 હોય તેવી અને તેવી જ સંખ્યાને 2 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય. હવે આપણે કોષ્ટક દ્વારા સમજીશું. 1. 46માં એકમનો અંક 6 છે, જે બેકી સંખ્યા છે. તેથી 46ને 2 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે. 2. 53માં એકમનો અંક 3 છે, જે એકી સંખ્યા છે. તેથી 2 વડે 53ને નિઃશેષ ભાગી શકાય નહીં. 347માં એકમનો અંક 7 છે. તેથી 347ને 5 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય નહીં. બાળમિત્રો, હવે આપણે કોષ્ટકમાં જે સંખ્યા છે તેના એકમના સ્થાનમાં 0 અથવા 5 હોય તેવી જ સંખ્યાને આપણે 5 વડે નિઃશેષ ભાગી શકીએ છીએ, જેને 5ની વિભાજ્યતાની ચાવી કહેવાય.